much about Kavach, it's everywhere on Yes, social media. we must. Could you please clarify for the layman Yes. what role does Kavach have in this accident, or it doesn't have any role? Please clarify. I'll do that. एक कवच के बारे में भी मैं आप लोगों को सबको समझाना चाहूंगी कि सबसे पहली चीज जो कि वी शुड बी प्राउड ऑफ कि ये एक इंडिजिनस डेवलपमेंट है। ये भारत का अपना बनाया हुआ सिस्टम है जो कि एक एंटी कोलिजन सिस्टम है। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस एंड वी होप दैट टुमारो वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहली चीज। दूसरी चीज, चूंकि ये एक इंडिजिनस सिस्टम है और ये सेफ्टी रिलेटेड है और ये ट्रेन्स की सेफ्टी जिसमें कि लोग आते जाते हैं, माल आता जाता है, इसलिए इसकी टेस्टिंग बहुत रिगरस होती है। इसमें हमने हर तरह की टेस्टिंग करी है और जब हम लोग इससे सेटिस्फाई हो गए कि ये बिल्कुल ठीक है और खरा है और ये सेफ है, इसमें इस लेवल की टेस्टिंग की गई कि मंत्री जी खुद उसमें ट्रेन में चले और दूसरे डायरेक्शन से एक और ट्रेन लाई गई और ये चला के देखा गया कि फुल स्पीड पे भी गाड़ी पे ब्रेक लगता है। सो दैट इज द लेवल ऑफ टेस्टिंग वी हैव डन, दैट इज द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट दैट हैज बीन देयर एट इवन द टॉप मोस्ट लेवल। After we were satisfied that this is now a technology that we can proliferate all over the country, then let me explain that what does it involve? It involves putting these devices all along every single track of Indian Railways. And I hope you people know how many kilometers of track does Indian Railway have. Okay, so physically putting these devices along the track is going to take some time. We need some time. Secondly, every single locomotive has to be equipped to read the signals from those devices. So we own more than 8,000 locomotives which are running. Every single locomotive has to be equipped with this equipment. Fourthly, it costs money. So what has been done? Because we know that this is a device that we need on top priority to make safe rail journeys safe, it has been sanctioned as a priority work on Indian Railways. The money has been sanctioned and it has been made available in the budget. Kitna amount hai? Can we share the amount? 13,000 crore for 34,000 route kilometers. So first we decided that we will identify priority high speed sections, and for that alone more than 13,000 crore has been sanctioned for proliferation. Then comes the question of having the production capacity to produce this indigenously. As I have explained it to you, this is an indigenous development and we are very, very proud of it. So to have that kind of equipment production capacity in our own country, we need a little more time. So our vendors are not in position, our production units, our producers, our market, our industry is gearing up to produce and supply as much as Indian Railway needs. So that will also take a little while. So Kavach is there, it is on a rollout. Everything to make sure that it is rolled out at the fastest pace possible is there, but you must understand the quantum of the work involved. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।